what are the key technology areas that we are going to focus to gain that design level capability. We identified very important key technology areas and prioritized them to be developed in NASTP technology divisions. And these are the divisions that are highlighted before you in which we are currently progressing. And inshallah, most of them you'll be visiting today, and in coming times, rest of them, some of are being established at other places. And human resource is the linchpin for all these undertakings. So we touched upon this topic in concept document as well as in the technology development roadmaps. And again, a very pragmatic implementation plan. Sir, I would like to take just 30 seconds on this particular slide. That implementation plan is very important. We're embarking upon a journey that has to be calibrated from time to time. We have to apply mid-course corrections. So we did not plan 10 years in one go, but we planned stage-wise plan. First 2 years, we will do these projects and these technologies. Then another 4 years, this will be done. And these will be the targets for the next 4 years. And that is how we formulated this implementation strategy. Last but not the least, sir, I would like to submit to you that we have also formulated very comprehensive set of documents that are going to give us the requisite procedures. Again, I'm going to just flash the categories of those procedure manuals in front of you to just give you an idea. These documents have helped us tremendously achieve what we'll be submitting to your kind self today. So the audience might be wondering, how would these set of documents have helped this team to achieve it? As I mentioned, at the beginning there was a team, and we continue to co-op members, and Pakistan Air Force specialists started to come in, and it gave us a complete understanding of sequencing it, in what steps and how to plan infrastructure, how to plan our human resource development, training programs, what kind of certification are required. All the homework became very clear to our team, and we were fortunate. At the end, we always say, the great blessing of Allah comes together to help us. Where are our deficiencies? He helps us and guides us to meet that. So this was the second part. Now I'll move to the practical implementation and just give you an overview of what we have set forth under the direction of the Pakistan Air Force leadership. We started to develop 3 technoparks in Rawalpindi, Karachi, and Lahore, and 1 mothership, flagship project as a National Aerospace Cluster of Pakistan at Kamra. Development of 3 technoparks in Rawalpindi, Karachi, and Lahore has been initiated, and Alhamdulillah Rabbil Alameen, we are blessed to have the honor to witness the launch by the Honorable Prime Minister of Pakistan and the military leadership today. Concurrently, development work was started on the NASTP Kamra, and maximum support has been provided by highest Pakistan Air Force office, and work of NASTP Alpha Division completed in 1 year and will be presented today. It is my profound privilege to acknowledge that all projects have been very closely supervised by no less than the Chief of the Pakistan Air Force. Ladies and gentlemen, now let me share with you a glimpse of how did we went on to implementing these programs. If you see in these slides, you'll find some people in blue uniform. You'll find some people in the civilian dress. These are the specialists from the aerospace, urban planning, architecture, and so many other disciplines, and they sat together in innumerable meetings to define the contours of that infrastructure and design centers that will be required to meet our requirements and achieve the design level. And sir, I'm happy to report that this team has come together, and we have been able to prepare a very comprehensive set of master plans that will give us the design centers, training centers, and the private sector coming together on one place and creating that thriving ecosystem of the technoparks which are required for design, development, as well as innovation. Sir, to further orientate you about the project that you'll be witnessing today, this NASTP chapter that you will be inaugurating today and will have the honor to witness that, it is called NASTP Alpha. We have chosen to call Alpha because Allah starts with Alpha. First letter of the Urdu and Arabic alphabets are Alpha. And Alpha is also very popular among the technology companies. So we chose this name to have the blessing, and NASTP Alpha is used to number different buildings from Alpha 1 to Alpha 11. And various divisions, as have been indicated on the chart, are presented over there. This technopark is beautifully separated into 3 campuses.
the first and foremost campus where we're sitting right now. This we call the private sector enclave, where the private sector companies from Pakistan as well as allied countries, training division, and so many other things are represented. The second campus that you will be visiting is called as NASTP Alpha Cyber, AI, and IT campus. There you will be meeting the people from the cyber, IT, and the information and software development domain. The third and the biggest campus that we have, we call it the NASTP Alpha Aerospace Campus, where the technology divisions in the aircraft, space, and other niche technologies are represented. So you will witness today that we have achieved the first objective set forth by the Chief of the Air Staff to consolidate the existing R&D capability of PF Organic setups that will be displayed to you, your good self, sir, during the presentation today. So let me also take the privilege to apprise that it has been deeply an honor for the NASTP team to have always been guided by none other than the Chief of the Air Staff, our principal staff officers. They have been visiting, and frequent briefings have been given to the Chief of the Air Staff, and we have been given regular direction as to how to proceed. Even before this inauguration ceremony, we have had countless visits by the Chief of the Air Staff, in which we have been able to improve all the things very comprehensively. So may I also kindly submit to your good self, the next coming park is NASTP Sierra Karachi. This is being established at Shahrai Faisal. It's a prime location, and this is much bigger than even this technopark. And it has maximum capacity for the private sector. Some of the highlights of this NASTP Sierra is flashed before the audience. So may I also submit that the third technopark in series, inshallah, will be coming, is called NASTP Delta Lahore. This is again a huge technopark. In that technopark, we have dedicated to IT industry. We are establishing a NASTP Institute of IT and so many other training centers, and with the joint venture and with the Pakistan Air Force and the Tri-Services support, we are going to establish this as a spread over 9.18 acres and more than 300,000 square feet of area is available. Some of the highlights of this technopark are flashed before the audience. So after launching these three technoparks, we will go back to the mothership, the flagship National Aerospace Cluster of Pakistan, which is being established at Kamra. And because it's a huge undertaking, and again the clear direction, we are proceeding in a practical approach, and we are establishing the phase one, which is highlighted in front of you, and I'll give you some more salients in following slides. This is the biggest technopark that has more than 700,000 square feet of covered area. It has spanned over 120 acres, and an additional 50 acres is designated for the first ever aviation and aerospace campus of the Air University to provide that academia-industry linkages right at the spot. So may I have the honor to submit to you the strategic aspect of this project NASTP, which is the requisite design centers, labs, cybersecurity, HPC, etc. It is called ADIC, Aerospace Design Innovation Center. It has more than 10 design centers, 25 labs, and HPC center. It has more than 500,000 square feet of covered area, which is bigger than this entire technopark. And ADIC will be the nerve center for all the national and international collaboration with more than 2,000 design specialists. We have the honor to have representation from Baykar. We have the Turkish aerospace industry. We have our colleagues from China. We are going to make this a nerve center for all collaborations, national as well as international. And I'm honored to apprise to you that this technopark, NASTP Alpha, Kamra, and Sierra, Karachi, and Lahore, all have been declared special technology zones. And I'm very thankful to the Chairman SDG also, who is present in the audience. So Kamra it is also very important for me to highlight that Kamra has been designated as the Aerospace Design Innovation Center by the leadership of the Pakistan Air Force. Furthermore, sir, it is also my privilege to kindly submit to you that having successfully launched this NASTP Alpha and making great progress on the other three technoparks, the worthy Chief of the Air Staff has also ordered the launch of phase 2, which has been immediately launched, and phase 3 is in the making.
and we are now making progress in additional technoparks in Kamra, Karia, and second location in Karachi. More than 200,000 square feet area is being added. That will be, inshallah, sufficient to bring in 250 small, medium enterprises in the IT and aerospace domain. In short, PF leadership has directed launch of phase 2 as well as phase 3 of this project. It is also my privilege to submit, sir, that there's a huge organizational management structure that has to be in place to manage a complex project like this. And our team of professionals has made organizational charts, which is at the top, headed by the Chief of the Air Staff, Pakistan Air Force. Just to give the audience an idea of how complex these organizational charts are, how complex the departments and their sub-departments are, in all the technology divisions, this has been undertaken by the specialists, domain experts, with an effort of 6 months. Furthermore, these organizational structures would not work efficiently alone. They have to be connected with the national landscape, with institutions, with the tri-services, and that is what also is being undertaken. Sir, I'm sure that you will be pleased to know that we have been making entire effort to focus on national youth, because that is our future. Sir, we are blessed to have more than 64% of our population under the age of 29, and this project and these kinds of projects by the Pakistan Air Force and by the great initiative of tri-services and the SCFC that I will mention in the end, I'm sure that we are going to tap this youth and give them the requisite resources and mentorship to go to the next level. We have been given the job opportunities, and these are some of our flagship students and officers that will be presenting their projects to you today. And first and foremost, another important flagship project that I also want to highlight is that graduates at all levels from universities graduate, but they sometimes require industry-level skill sets that are not provided in the academia. Therefore, we are establishing 4 flagship institutes in the IT, aviation maintenance training, flight and safety training, and engineering to make these national youth as the industry ready and be able to become startups in the future. I'm very happy to report, sir, that first time in the history of Pakistan, over 75 years, we have been able to work together with an Italian partner, and we are going to bring the first real EASA certified campus to Pakistan that will give the B1, B2 degrees to our graduates to improve their job prospects within Pakistan as well as international market, which is really looking forward to more technicians. And there's a forecast that more than 600,000 technicians are required in this particular region. May I also kindly submit that in this park today, you'll be witnessing the first ever vertical incubator, National Incubation Center for the aerospace technologies, which is the collaboration of Ministry of IT, National Aerospace Science and Technology Park, and a private sector. And Ministry of IT has provided us with more than 1 billion rupees of funding, which is again largest in the history of the country. We are also establishing the cyber and IT focused vertical, because if I may kindly submit to you, sir, that our cyber capacity and capability has come long ways. And we have attained the leadership in this particular domain, which is extremely essential for the national level as well as service level. We are collaborating with the tri-services, and the details will be shared with you when you will be visiting the second campus of our project. We have also partnered with some private sector companies to bring in the co-working spaces, which is an addition to the already existing incubators. Another major area that I want to also highlight is the fruits of and outcomes of the collaborations that we have been undertaking with various countries, and special mention of Turkey at this stage. So we are happy to partner with the cyber and IT big company of Turkey called Cryptek, and the Cyber Koza. It's also again a Turkish company, to establish the various incubation centers in cyber and IT domain and jointly develop various products. We have signed joint venture agreement, and the CEO of this company will be meeting you today, inshallah, at the Cyber Koza premises. Sir, the Chief of the Air Staff took maiden visit to Baykar Technologies in June of 2021, and we took a very aggressive approach, and we went all the way
And today we are honored that the CTO of this company, Mr. Saljuk, is with us. And we have come long ways in the progress in this particular domain, which is the UAVs, giant loitering munitions, and so on and so forth. You will also be presented this particular domain as well. I'm honored to have Mr. Orzangin, the Turkish Aerospace Industry Vice President, who's among us, and he has traveled all the way to be part of this ceremony. We are doing the strategic projects with the Turkish Aerospace Industry Collaboration. NASTP Space Division, in collaboration with ITU, is establishing the first ever CubeSat is being developed. This will be smallest in its category. And we also, sir, executed the first ever joint working group and industrial expo for the Pakistan's private sector in this January. More than 40 companies and 5 universities of Pakistan presented their projects to our colleagues and friends from Turkey. This brings me to the end of my presentation, where I have the honor and privilege to present to you the strategic project, which is the strategic vision for the Chief of the Air Staff, and which is called the Project PFX, Pakistan Fighter Program. With the collaborations already in place with the brotherly countries, we feel very well poised that we will, inshallah, utilizing the capabilities in the form of Aerospace Design and Innovation Center, we will be able to, inshallah, achieve the great results in the coming days in implementation of the technology development roadmaps and so on and so forth. In the next 2 minutes, I will quickly show you the inside of this particular strategic asset that Pakistan Air Force has built through NASTP. So these design centers are the core capabilities of this building. There are more than 10 design centers being established, and they will give us the capability to develop all those strategic projects. So to conclude my presentation, I must first of all admit that the Chief of the Air Staff has very closely monitored the NASTP progress, undertaking countless visits, inspections, and briefings on very regular basis. And sir, we are very indeed honored for this patronage and guidance to all of us. Well-proven models of design, R&D, and innovation have been applied at the national level with the NASTP platform, and project has entered a very well-defined rollout phase. We are also extending our special thanks and support to the Special Technology and Authority at this critical juncture that they have worked day and night with us to give us the Special Technology Zone status to all 4 technoparks of NASTP. Ministry of IT, PSAP, Ignite, and PITB have extended us great amount of support, and without which we would not have achieved what we have seen so far. Ministry of Planning, I'm very thankful to the Honorable Planning Minister, sir, that we have been able to get all this support
from the Planning Commission. And HEC and NASTP are really our patrons, and because we're connecting all the training centers and institutions with the national pipeline to bring in the raw HR and make them industry ready. So we have the patronage of the Higher Education Commission and so on. So in the very end, I would like to make a very special mention of a great initiative by the Honorable Prime Minister, sir, and worthy Chief of the Army Staff. Sir, it is my profound privilege to acknowledge that as the first ever and biggest motivating engine and vision for Pakistan's progress and prosperity, SAFC has come at the right time. And it will inshallah open the doors for FDI, which is much needed for the country. We also believe that what you have been presented right now, and inshallah you will be witnessing in the visit plan, you will be able to acknowledge that NASTP is well placed to deliver according to this national mandate, along with the tri-services. And we believe that IFC is well poised to bring major FDI to Pakistan. Sir, it is a profound privilege once more time. I really appreciate you taking out the time and honoring us today with your graceful presence. I'm also very thankful to worthy Chief of the Army Staff and our distinguished guests for honoring us and providing us with this opportunity to showcase what has been going on for the last 1 year under the umbrella of Pakistan Air Force and current leadership of Pakistan Air Force. Thank you so much, ladies and gentlemen. नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के इफ्तिताही तकरीब में वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी इस तकरीब के हैं। साथ ही साथ उनके अफवाज पाकिस्तान के आला अफसरान आज इसमें शिरकत कर रहे हैं। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क एक कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत के मनसूबे के तौर पर मुल्क के लिए कसीर जहती फ़वायद हासिल करेगा और पाकिस्तान में तकनीकी तरक्की की हौसला अफजाई करेगा। यह मनसूबा नौजवानों और आने वाली नस्लों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करके पाकिस्तान की खुद इन्हिसारी के सफ़र में अहम संग मील साबित होगा। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज कायम करेगा। ये मनसूबा एविएशन, स्पेस, साइबर के मैदानों में डिज़ाइन, तहकीक, तरक्की और इख्तरा को फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी अनासर का इकोसिस्टम फराहम करेगा। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह की अंतकाविशों से ये मनसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया है और आज इसकी इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की जा रही है। नेशनल एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का एक इफ्तिताह है जो पाकिस्तान में एक अहम संग मील साबित होगा पाकिस्तान के एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से तरक्की में। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा, आला अस्करी और सिविल हुक्काम आज की इस तकरीब में शरीक हैं। गैर मुल्की मंदूबीन भी आज की इस तकरीब का हिस्सा हैं और नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया है। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क एक कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत के मनसूबे के तौर पर जो मुल्क के लिए कसीर जहती फ़वायद हासिल करेगा और पाकिस्तान में तकनीकी तरक्की की हौसला अफजाई भी करेगा। यह मनसूबा नौजवानों और आने वाली नस्लों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करके पाकिस्तान की खुद इन्हिसारी के सफ़र में अहम संग मील साबित होगा। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज कायम करेगा। यह मनसूबा एविएशन, स्पेस और साइबर के मैदानों में डिज़ाइन, तहकीक, तरक्की और इख्तरा को फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी अनासर का एकोसिस्टम फराहम करेगा। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से आपको बताएं कि पाक फ़ज़ाइया के सरबराह की अंतकाविशों से ये मनसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। ये मनसूबा एविएशन, स्पेस और साइबर के मैदानों में डिज़ाइन, तहकीक, तरक्की और इख्तरा को फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी अनासर का एकोसिस्टम फराहम करेगा। इस मनसूबे के हवाले से ये भी बताया जा रहा है कि नौजवानों और आने वाली नस्लों को एक प्लेटफॉर्म पर मुहैया करके पाकिस्तान की खुद इन्हिसारी के सफ़र में अहम संग मील साबित होगा। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क एक कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत के मनसूबे के तौर पर मुल्क के लिए कसीर जहती हासिल करेगा और पाकिस्तान में तकनीकी तरक्की की हौसला अफजाई करेगा। इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ आज इस तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं। वफाकी वज़रा उनके हमरा हैं, मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं, सिविल और अस्करी हुकाम आज की इस तकरीब के अंदर मौजूद हैं। गैर मुल्की मंदूबीन भी इस तकरीब का हिस्सा हैं।
नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के एक कौमी इदारा और स्ट्रेटेजिक अहमियत के मनसूबे के तौर पर जो मुल्क के लिए कसीर जहती फ़वाद हासिल करेगा। एयर कोमोडोर लियाकत अली ने कुछ देर पहले ब्रीफ किया है इस मंसूबे से मुतल्लिक और इस पार्क से मुतल्लिक कि क्या किस तरह से ये अगले आने वाले वक्त में एक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ये किस तरह से फ़वाद इससे हासिल किए जा सकते हैं। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का आज इफ्तिताह का दिन है। एक अहम संग मील पाकिस्तान ने यह तय किया है और पाक फ़ज़ाइया के सरबराह की अंतकाविशों से ये मनसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क की आज की तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूद हैं और उनके साथ मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा, आला सिविल और मिलिट्री हुक्काम भी तकरीब में आज शिरकत कर रहे हैं। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क एक कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत के मनसूबे के तौर पर मुल्क के लिए कसीर जहती फ़वाद हासिल करेगा और पाकिस्तान में तकनीकी तरक्की की हौसला अफजाई भी करेगा। ये मनसूबा नौजवान और आने वाली नस्लों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करके पाकिस्तान के खुद इनसारी के सफ़र में अहम संग मील साबित होगा। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज फराहम करेगा। ये मनसूबा एविएशन, स्पेस और साइबर के मैदानों में डिज़ाइन, तहकीक, तरक्की और इख्तरा को फ़रोग देने के लिए ज़रूरी अनासर का एकोसिस्टम फराहम करेगा, जहाँ पर मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं वो अलग अलग तौर पर इस वक्त काम कर रही थी, चाहे वो एविएशन का मामला हो, चाहे स्पेस साइंस का या फिर साइबर के मैदान में। लेकिन अब इस एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क से तमाम तर चीज़ें यकजा कर दी जाएंगी और यहाँ पर तमाम चीज़ों के यकजा होने से अब डिज़ाइन में मामलात में तहकीक, तरक्की और इनोवेशन के हवाले से वो ज़रूरी अनासर का एकोसिस्टम फराहम करेगा। यानी कि अब एक प्लेटफॉर्म पर तमाम की तमाम तर चीज़ें वो पाकिस्तान में मौजूद जितने भी इदारे इससे लिंकेज हैं वो काम कर पाएंगे, क्योंकि एकेडेमिया लिंकेज ये इदारा वो फराहम करेगा जहाँ पर नौजवानों के हवाले से बताया जा रहा है कि उनको एक प्लेटफॉर्म पर मुहैया करेगा तमाम सहूलियात कि पाकिस्तान खुद इनसारी के सफ़र में आगे बढ़ सके और पाकिस्तान चाहे एरोस्पेस साइंस का मामला हो, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का मामला हो या एविएशन की चीज़ें हों या साइबर के मैदान में, वो पाकिस्तान को आगे तरक्की करने में मदद मिल सकेगी। पाकिस्तान में ये एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस के हवाले से, एविएशन के हवाले से एक बड़ा अहम मामला है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कराची में। लिया जाता है उसको कम कराने की कोशिश कर रहे हैं और हो रही है। बिजली की उसमें अच्छा, एक और अहम बात, एक और अहम मुतालबा आप लोगों का हमने पूरा किया, वो ये था कि कराची में एक से ज़्यादा कंपनियों को मौका दिया जाए ताकि हमारे पास चॉइस हो। इस दफ़ा जो उनको लाइसेंस मिला है वो मोनोपोली वाला नहीं है, नॉन एक्सक्लूसिव अगर मिलेगा। अच्छा, ये आबादी का बाजियाबी का अमल है, लापता आबादी का बाजियाबी जी। लंबी कहानी है तो बहुत लंबी, ये इस पे अलग बात करेंगे। बस देखें, बात ये है, आपके पास फिर सवाल छोड़ के जा रहे हैं ना कि 60-70 लाख कराची के लोग बरामद हुए हैं, तो जवाब तो सूबाई हुकूमत को देना है जिन्होंने गिने। क्या लिख के दे दें यार अभी? जी ये है, ये मरकजी दफ्तरी है हमारा, इसको मरकजी इलेक्शन सेल भी बनाया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ख़ास तौर पर एरोस्पेस साइंस के हवाले से, एविएशन के हवाले से और साइबर के मैदान के हवाले से एक बड़ा दिन है, जहाँ पर आज रावलपिंडी में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह हो रहा है। और आज की तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मौजूद हैं। मनसूबा पाकिस्तान के खुद इनसारी के सफ़र में अहम संग मील साबित होगा। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क सनत और तालीमी राब्ता फराहम करेगा। मनसूबा एविएशन, स्पेस और एयरस्पेस के हवाले से जो है वो चीज़ों में आगे पाकिस्तान को लेकर जाएगा। और दूसरी जानिब नाज़रीन, आपको इस वक्त सेनेट के इजलास में लिए चलते हैं। आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं।
सेंसेस होंगे, डिजिटल सेंसेस होंगे और उस पर उस वक्त के वज़ीर के भी दस्तखत हैं और तमाम सियासी जमातों के भी। तो इसलिए समझा जा रहा है ये ज़रूरी कि ये मामला एक दफ़ा जो एक आइनी बॉडी है उसके सामने रखा जाए ताकि उसको मेरिट पे जांचें और उसके मुताबिक फ़ैसले करें। कोई ऐसी एप्रीहेंशन वाली बात नहीं है जी, वो बल्कि उसमें ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए ये फ़ैसला किया गया हुकूमत ने कि ये मामला CCI के सामने रखा जाए, वहाँ पे ये सारे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस होंगे। और मैं मशकूर हूँ अपने दोस्तों का, ख़ास तौर पे जो मेरे साथी हैं सेनेटर्स बलूचिस्तान से, कि वो मेरी दरख्वास्त पे वापस आए। मैंने इनकी गैर हाज़िरी में जो बातें की वो उन्हें मैं अंदर जाके बताया हूँ कि जी हम आपके साथ हैं, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की ज़िम्मेदारी है। ये हाउस ऑफ फेडरेशन है और मैं फिर एक दफ़ा रिएट्रेट करूँगा कि कोलिशन गवर्नमेंट के जो टॉप प्रायोरिटीज़ हैं उनमें बलूचिस्तान के मसाइल का हल और बलूचिस्तान की तरक्की है। और जो रिपोर्ट्स मैपिंग्स में आई हैं, जो रिपोर्ट्स आज तक हमें मौसूल हुई हैं, मैं ख़ुद उन प्रोसेस में रहा हूँ जब हमने रीनिगोशिएट किया बैरक गोल्ड के साथ। अल्लाह ताला ने इस सूबे को इतने ज़खायर से नवाजा हुआ है कि इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ एक दिन आएगा आपके मुल्क की तकदीर जो है वो बलूचिस्तान बदलेगा इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। जी शहरी रहमान ने अगर अभी नहीं बोला ना तो तुम सब की खैर नहीं है। जी प्लीज दादी, आप, मैं इधर ही हूँ। सरदार साहब आ जाइए, मिनिस्टर भी हैं। ऑनरेबल फेडरल मिनिस्टर फॉर क्लाइमेट चेंज प्लीज। अभी आपने दादी बोला तो मुझे भी एक्सपांड जरूर कर दें कि फिर मैं कहूंगी दादी कोई बुरी बात तो नहीं है, ये तो ऑनर की बात है। दादागिरी नहीं चलने की है चेयरमैन। फिर देखिए किस किस की है सर। सीरियस बात थोड़ी सी मैं ये करूँगी कि बात तो मुझे फिर मैं इख्तिसार से ही बात करूँगी, बट एक मसला अहम है। उससे पहले सेंसस के हवाले से चेयरमैन साहब, क्योंकि यहाँ डिबेट छेड़ी गई है, तो बात ये तो मेरी अपनी तंजीम से ज़रूर मैं कहूँगी कि मौक़िफ़ हमारा है कि ये सेंसस की बात, और सबको पता है मुतनाज़ होती है और लोगों को इस पर ऑब्जेक्शंस हैं कि कौन से सेंसस पर इलेक्शन होंगे, और हरका बंदियों पे एक नई खुलती है, टाइम का एक इशू होता है, तो ये ना इस्तेमाल किया जाए इलेक्शंस में ताख़ीर के लिए। और ये एक आपने आम फहम ये बात सुनी होगी, तो मैं इस हवाले से कहना चाहती हूँ कि हम नहीं चाहते कि इलेक्शंस में ताख़ीर हो और ये वक्त पे हों और आइन के मुताबिक हों। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रही थी चेयरमैन साहब, वो एक इस हाउस में पता नहीं नोटिस लिया है कि नहीं, लेकिन सेनेट आजकल बहुत फ़ाल तरीके से अपना किरदार अदा कर रहा है और मैं भी शुक्र गुज़ार हूँ सबकी कि जिस जिस तरह उन्होंने जिन बिलों में खामियां थीं उनको कमेटी भेजा और वहाँ से हम उनकी फहम से मुस्तफ़ीज़ हुए। चेयरमैन साहब, जो इशू है छोटा सा तो नहीं है, बड़ा इशू है, वो एक सेनेटर रुखसाना मोबाइल बंद करें वरना अभी जब्त कर लूंगा। किस किस के मोबाइल जब्त हो रहे हैं? अब देखिए, अच्छी बात है, बिल्कुल हाउस में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। चेयरमैन साहब, इसमें एक बात बहुत आजकल सामने सबके है और मैं समझती हूँ हम सब मुत्तफक हैं कि इस वक्त एक लड़की है जो नाबालिग है और उसका नाम रिजवाना है। वो नाजायज़ लोगों के ताकत के इस्तेमाल का, एक सिविल जज की ना उनकी फैमिली के ताकत के इस्तेमाल का शिकार है और हस्पताल में ICU के अंदर अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही है, लेकिन किसी ने ये नोटिस नहीं लिया और उनकी फैमिली, उस सिविल जज की फैमिली जिन्होंने इस लड़की का ये हशर किया है, मतलब उसका हशर देखने का है। और लाहौर के ICU में, वो एक अस्पताल में है, सारे लीडर्स लाहौर के जो हैं वो बहुत सारे गए भी हैं उनकी इयादत करने। लेकिन मुझे बताएं कि जब हर चीज़ का सुओ मोटो लिया जाता है, नोटिस लिया जाता है, तो जब अपने घर से कोई इस तरह अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहा है, तो ये कहाँ का इंसाफ है चेयरमैन साहब? क्यों नहीं अपने घर में पहले देखा गया है और क्यों नहीं? मैं आपके तवस्सुत से गुजारिश करती हूँ कि ये ना किया जाए कि प्रोटेक्टिव बेल्स दे दी गई हैं, चलिए कानून के मुताबिक जो होना है, लेकिन उस लड़की को। वफाक वज़ीर शहरी रहमान इस वक्त सेनेट इजलास में इजहार ख्याल कर रही हैं और रिजवाना के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है जिसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। सेनेट इजलास की कार्रवाई आप देख रहे हैं। इस वक्त वफाकी वज़ीर
शहरी रहमान इजहार ख्याल कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से ये प्रोटेक्टेड बेल मिल जाती हैं, इस तरह से ये देखना चाहिए कि ये प्रोटेक्टिव बेल जो हैं वो ना दी जाए। रिजवाना जो एक नाबालिग बच्ची है, जिस तरह से उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, इस मामलात के हवाले से शहरी रहमान की जानिब से बात की जा रही है। सेक्रेटेरिएट को इस तरह करता चेयरमैन साहब, आप कहते कि मैं नोटिस ले रहा हूं कि नहीं, आप कहते आप बैठे नहीं रहते, और हम तो वैसे भी आपके गले पड़ चुके होते, क्यों आप बैठे। तो ये जब अपने घर में बात होती है तो क्यों नहीं नोटिस लिया जा रहा। ये बर्बरियत और सबके सामने बर्बरियत होती है, पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी करी है। इसमें तो चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट भी लागू कर देना चाहिए। मैं पंजाब पुलिस से कहूंगी अगर उनको काफी नहीं हो रहा, उनको इस वक्त प्रोटेक्टिव बेल मिली हुई है, हिफाजती बेल मिली हुई है, जमानतें मिली हुई हैं, तो भाई और बहुत कवानीन है पाकिस्तान के। यहाँ मादर पिदर, ये यहाँ जंगल का कानून नहीं है चेयरमैन साहब। इनको कहें कि अपने घर में जब बर्बरियत हो रही है तो ना अपने ताकत का नाजायज इस्तेमाल करें, और मासूम निहत्ती बच्चियों का इस तरह ये जिस तरह तशद्दुद का निशाना बनाया गया वो रोकें और इंसाफ बहाल करें। थोड़ा सा ऐड कर दूंगा सर आपकी इजाज़त से। जी ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर लॉ, माजरत मैं बार बार मुखल हो रहा हूँ, लेकिन ये भी आपके लिए ज़रूरी था। बड़ा ये अफसोसनाक वाक़या, और ये पहला वाक़या नहीं है, ये वाक़यात हुए हैं। मेरे ख्याल में हमें एक अवेयरनेस कैंपेन की भी ज़रूरत है कि हम ये लोगों को ये पैगाम पहुँचाएँ। और मेरे लिए तकलीफ दे बात ये भी है कि जो पहला तैयबा वाला वाक़या हुआ था उसमें हालांकि उसको वाक़तन निशान इबरत बनाया गया और सज़ाएँ हुई, सज़ाएँ बहाल रहीं, सुप्रीम कोर्ट तक अपीलें खारिज हुई। उसके बावजूद ऐसे वाक़यात का होना, हुकूमती सतह पे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है उसमें तो 3-4 स्टेजेस होती हैं कि पहले आप बिल तैयार करते हैं, वो इन प्रिंसिपल अप्रूवल होती है, फिर वहाँ पे CCLC में, फिर कैबिनेट में दोबारा, और फिर मिनिस्ट्री कंसर्न। तो इस इशू को अब सीरियसली डील करने की ज़रूरत है। हमने लॉ मिनिस्ट्री में अपने तय एक कोशिश की है, एक छोटा सा अमेंडमेंट्स का बिल तैयार किया है। मुझे उम्मीद है कि वो हुकूमती बिल के तौर पे आ जाएगा, वरना ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान के फ्लोर पे मैं खुद इसे मूव करना चाह रहा हूँ, और कोशिश करेंगे कि जहाँ पे और स्पीडी चीज़ें हो रही हैं, ये एक नेकी का काम है, मुश्ताक साहब की इजाज़त से ये करके जाएँ इंशाअल्लाह। ऑनरेबल सेनेटर नवाबजादा उमर फारूक प्लीज। थैंक यू चेयरमैन साहब। जैसे कि हमारे फाजिल मेंबरान ने बार बार बलूचिस्तान के हवाले से इशू पे बात की है। सर ये आऊ सब का मेंबर वो भी है सर। माजरत के साथ अभी कोई ऐसी डिस्कशन नहीं हो रही कि पार्लियामानी लीडर वाले, ये तो पॉइंट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस है। अब डायरेक्ट सेनेटर बात करेगा। थैंक यू सर। जी तो ये पीछे सरदार साहब, पीछे बेंचेस वाले हमेशा नहीं बोलते, कभी कभी हमें मौका मिलता है। जी जी और साहब बात करें चेयर के साथ। मैं ये कहना चाहता हूँ चेयरमैन साहब के 15 महीने से जब से ये गवर्नमेंट आई है, जैसे अभी हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा कि हमें बलूचिस्तान के हवाले से सिर्फ तसल्लियाँ दी गई हैं, इसके अलावा कुछ ऐसा हमारे साथ नहीं किया गया है। जब भी कोई मैटर आया हमारा। इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर रहे हैं और तख्ती की नकाब कुशाई की जा रही है। उनके साथ इस वक्त एयर चीफ मार्शल भी मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एरोस्पेस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया है और इस वक्त सरबराहान अफवाज के मौजूद हैं। उनके साथ आर्मी चीफ भी और एयर चीफ भी उनके हमरा मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर रहे हैं। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, वफाकी वज़रा, आला सिविल अस्करी हुकाम भी आज की इस तकरीब में मौजूद हैं। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया है। ये मनसूबा नौजवानों और आने वाली नस्लों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करके पाकिस्तान के खुद इनसारी के सफ़र में अहम संग मील साबित होगा।
को दुनिया और आखिरत की कामयाबी नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबील करीम। नकाब कुशाई कर दी गई है और बाकायदा तौर पर नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के हवाले से कहा जा रहा है कि ये कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत के मनसूबे के तौर पर मुल्क के कसीर जहती फ़वायद हासिल करेगा और पाकिस्तान में तकनीकी के लिए एक संग मील साबित होगा। ये मनसूबा पाकिस्तान के नौजवान ख़ास तौर पर जो एरोस्पेस से मुतल्लिक़ और साइबर के मैदान में काम कर रहे हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा जिससे पाकिस्तान के खुद इंसारी के सफ़र में आगे बढ़ने में मदद मिल सकेगी। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज कायम करेगा। यह मनसूबा एविएशन, एरोस्पेस और साइबर के मैदानों में डिज़ाइन, तहकीक, तरक्की और इनोवेशन को फ़रोग़ देने के लिए ज़रूरी अनासर का एकोसिस्टम फराहम करेगा। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का इफ्तिताह कर दिया गया है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से। पाक फ़ज़ाइया के सरबराह की अंतकाविशों से ये मनसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। ये एक बड़ा और अहम संग मील होगा पाकिस्तान में नेशनल एरोस्पेस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क, जो पाकिस्तान में एरोस्पेस के हवाले से, एविएशन के हवाले से और साइबर के मैदानों में चीज़ों को आगे बढ़ाएगा। आज की इस तकरीब में मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान भी वज़ीर आज़म के साथ मौजूद हैं। वफाकी वज़रा और गैर मुल्की मंदूबीन भी आज इसका हिस्सा हैं। इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज फराहम करेगा मुख्तलिफ जो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से चीज़ें हैं, जिसमें एविएशन जो एरोस्पेस के साथ जुड़ा है और साइबर के मैदानों में ये पाकिस्तान को आगे लेकर जाएगा। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद इस हवाले से बात होगी। So juicy, so yummy. Introducing the all-new Sabroso Crispy Chicken Strips. Tastes so good that nothing else matters. Sabroso Crispy Chicken Strips. So crispy, so tender. क्या हुआ? स्कूल में लड़कियों ने तंग किया। बैठो, ये देखो तुम्हारे बाल। इन्हें खींचो, मरोड़ो, तंग करो। इन्हें चोट लगती है? क्योंकि ये मजबूत हैं। तुम भी तो मजबूत हो ना। एक माँ ही बनाती है बेटी को